Can you hear me? I'm audible. So, dear friends, today we are going to start discussion on traditional acupuncture concept for liver meridian. So, when we talk about the liver meridian, what we have in our mind? We have something in our mind, okay, liver organ, which is located in the abdomen. But as per the TCM, liver meridian is starting from the great toe. We can see here this is the liver 1. Then the liver meridian going liver 2, liver 3, liver 4. तो लिवर मेरिडियन हमारे पैरों से स्टार्ट होकर ऊपर की ओर जाता है. Then liver meridian crossing the knee, genital part, going in the abdomen. Then we can see it's entering inside the liver meridian. लिवर मेरिडियन हमारा लिवर के अंदर इंसर्ट करता है. Then the liver meridian generally ending here. This is the last point of the liver meridian, that is liver 14. ये हमारा liver 14 है, the last point of liver meridian. But then internal branch going further, then we can see here the internal branch of the liver meridian further going up, supplying the chest, supplying the throat region, then coming to the lips. So liver meridian having connection with the lips also, having with the throat also, liver meridian also going through the chest region. We are talking about the internal branch of liver meridian. Then the liver meridian going to the eye. So we know if the person is suffering with the eye problem, we are thinking for liver imbalance. आंखों का संबंध भी हमारे लिवर मेरिडियन से है. Then the liver meridian reaching on the DU20 or the vertex of head, हमारे सिर के टॉप में पहुंचता है. The vertex part of the head region. We can see here in this image how the liver meridian supplying the lips, eyes, and the vertex of head. सिर का एकदम सुपीरियर पार्ट, जिसे हम कहते हैं 20 नंबर का पॉइंट और लिवर और DU20. So if the person is telling, okay, I'm having headache on the top of the head, I'm having vertex headache, it might be because of liver meridian. When the person is having any type of the imbalance in the liver meridian,
there might be many symptoms might happen in the human body. जब लिवर मेरिडियन इम्बैलेंस होता है तो कई प्रकार के लक्षण पैदा हो सकते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ टीसीएम। हमें क्या समझना है? हमें टीसीएम की लैंग्वेज को समझना है। Just would like to bring your attention. Just while learning the liver meridian properly, what disease you can treat? Only while learning the liver meridian. I will show you the name of disease. But definitely the TCM, we are not planning the treatment based on the name of the disease. Suppose someone is telling you tremor or the Parkinson. Someone asking you, can you tell me the protocol of tremor or Parkinson, which is having connection with the liver meridian? But the TCM, we are not telling it Parkinson or tremor, we might tell liver bind. So first I will tell you what disease we can treat just by the liver meridian. I'm not talking about another meridian. So lots of neurological problem like stroke, Bell's palsy, facial paralysis, Parkinson disease, tremors, epilepsy, convulsions, जो मिर्गी के झटके आते हैं, फेशियल टिक्स, चेहरे का फड़कना, आंख का फड़कना, वर्टिगो, डिजीनेस, hemiplegia, these things we can treat if we are having idea of liver channel. So these all are the neurological disorders. Now, if we talk about the other problem like migraine headache, temporal headache, chronic headache, irritability with the head, or the tinnitus or the ringing sound in the ear, deafness, insomnia, person is not able to sleep, or stress headache. ये सारी हेड की जो प्रॉब्लम है हम जब हम लोग आपस में एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, whenever we are asking the question from each other, what we are asking? Okay, tell me the protocol of something like migraine, or tell me the protocol of insomnia, or tell me the protocol of headache due to stress. But we have to learn the language like it is written, liver chi stagnation. What is the stress headache? Liver chi stagnation. तो क्या होता है कि अगर आपको ये समझ में आ जाए, what is the stress headache? During the stress, the person is getting headache, that is liver chi stagnation. Then protocol is given here. Just apply the needle or the magnet, and problem will be resolved. And even the protocol also very scientific. Each and every point has been taken on the basis of scientific fact, like why we are taking liver 3, why we are taking liver 13, 14 and all. तो हमने देखा just by learning the liver channel we can treat multiple head and the brain disorders. Now eye disorders like blurred vision, dry eyes, night blindness, red eyes, pain in the eyes, floaters in the eyes, color blindness. These problems we can treat just by the liver meridian, but we should know what is the dry eyes. We are asking with each other, oh, please tell me, one patient is coming to me and doctor has advised put the eye drop again and again because tears glands are not making tears. Eyes become dry. तो हम आपस में अपने एक तो पूछते हैं एक दूसरे से ग्रुप में, यही तो पूछते हैं कि ड्राई आई का प्रोटोकॉल बताओ, है ना, फ्लोटर्स का प्रोटोकॉल बताओ.
एक बार हमें ये समझ में आ जाए, क्या समझ में आ जाए हमें? द ड्राई आईज आर liver deficiency, or the floaters in the eyes are liver blood deficiency, then it's become very easy to understand. Oh, I have to use this protocol. In the same way, there are many emotional problems like depression, anxiety, mood swings, irritability, anger, emotional instability, frustration. So we should understand, okay, irritability is there, anger is there, too much anger is there. Okay, let's work on the liver fire. बहुत गुस्सा आ रहा है, व्यक्ति चीजों को गुस्से में उठा के मार रहा है, फेंक रहा है ना? इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है ना, टीवी फोड़ दी, हारा जो उसने अपनी टीवी फोड़ दी। वो क्या है? व्हाट इज दैट? यू विल बी आस्किंग, ओके प्लीज टेल मी, my husband is very angry, my wife is very angry, my father is very angry. We need to work on the liver fire. Just we have to make our understanding, okay, this, what is this? Liver fire? Oh yes, I can read the liver fire. Now this is the beauty, if you know this is the liver fire, you can treat by TCM, you can treat by master tongue, you can treat by any method if you know what is the real diagnosis. Because in the TCM, there is a point of the liver fire. Even the master tongue, there is a point of the liver fire. Like we know 11.20 is the point of liver fire in the TCM. In the master tongue, sorry, in the master tongue. In the TCM also, there are 4 or 5 points given for the liver fire. We will work on the liver fire and we'll able to treat bursting anger. So we are working on the emotional problem. In the same way, like digestive disorders, person is having alternative constipation and diarrhea, acid reflux, belching, nausea, vomiting, abdominal distension, loss of appetite. We have to understand what is happening exactly. Why the person is having acid reflux? Because liver is invading on stomach. लिवर ने स्टमक को के ऊपर आक्रमण कर दिया है. Liver has attacked over the stomach. Liver is over controlling the stomach. Then person is suffering with the acidity, acid reflux. It's become so simple once you know, okay, this person is having, the diagnosis of this person is this. In the same way, we can treat multiple gynecological problems just by the liver, like painful period, irregular period, amenorrhea. In this way, the multiple endometriosis, uterine fibroid, infertility, tenderness in the breast. For example, someone is having painful period, okay. Someone is telling, okay, this person is suffering with the infertility. There is no formation of the ovum properly happening in the female. Treat the liver blood deficiency. Once you treat the liver blood deficiency, there will be proper blood supply to the part and there will be good formation of the ovum. In this way, we have to go in the depth of this understanding. This is just I am telling what we can treat just by liver. I am giving you just an introduction what we can treat by the liver, so that
your mind will become alert that you are going to learn a very wonderful thing. Okay, just making you aware कि आप लिवर से क्या क्या ठीक कर सकते हैं भाई. So like for example, the male reproductive disorder, pain in the testes, varicose, inflammation in the prostate, erectile dysfunctions, swelling in the scrotum. We can treat by the liver pattern. Skin disorder, eczema. Eczema and the psoriasis are the very common skin diseases. We can treat by the liver pattern. When the more heat in the liver blood, जब लिवर ब्लड में हीट होती है और जब हम लिवर ब्लड की हीट को कम कर देते हैं तो सोरियोसिस और एक्जिमा में रिजल्ट मिलता है. So we have to work here because someone is suffering with the skin problem and we are just thinking as per the 5 element concept. Okay, skin means lungs, we have to treat the lung, but we can't treat psoriasis and eczema until we treat liver blood. It's a very simple diagnosis, just liver blood heat. Now, person is suffering with the allergic races. It's very common. छोटे बच्चे जो कप डायपर पहनते हैं रेसेस हो जाते हैं. फीमेल कई बार जो ब्रा पहनती है उनके कपड़े के कारण उन्हें एलर्जीज हो जाती है. मेल फीमेल wearing some clothes or something, some any object which is creating allergy. So we have to work on liver bind, which is allergy. So in this way, multiple type of the urticaria. अर्टिकेरिया मतलब हमारे शरीर में जो लाल लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं, रेड रेड इरप्शंस, स्किन रेसेस, एलर्जिक रेसेस, we can treat with the liver pattern. And hepatitis, jaundice, gallstone, we can treat with a combination of liver and gallbladder pattern. Written liver and gallbladder disease. Okay. Not only this, there are lots of musculoskeletal disease. इतनी सारी like muscle cramps, tendon stiffness, muscle spasm, joint stiffness. The person is suffering with a muscle cramp. We should know what is the real cause of the muscle cramps. Muscle cramps are due to liver blood deficiency. तो जब मसल क्रैम्प आते हैं, अगर पता चल गया कि मसल क्रैम्प क्यों आ रहे हैं भाई, why the muscle cramps are there, because there is a not enough blood reaching to the muscles, so there is a muscle cramps. What is the treatment? Liver blood. Tonify the liver blood, increase the liver blood, muscle cramps will go away, muscle spasm. So in this way, muscle spasm, okay, muscle cramps, muscle spasm. Respiratory disorders, when the liver attack on the lungs, it create allergic asthma, like asthma, okay, breathlessness, cough with the blood and all. These all things can be treated by liver pattern. Now urinary problem like dark urine, burning urination, or the multiple problem of the urine we can treat. So this was the little introduction. Now I will tell you, migraine headache is a very common problem. Depression is also a very common problem. In the female, premenstrual syndrome like pain before the menstruation, and IBS, irritable bowel syndrome, fibroid, Parkinson, stroke, hepatitis. These all things we can treat using liver meridian. It's a wonderful meridian. I will tell you, I'm so excited to discuss this liver meridian with you. It's a really excellent meridian. Once you have the idea of all the patterns of liver meridian, near or there are 50, there are 50 symptoms, 50 symptoms of liver patterns. I will give you the list of the 50 symptoms. Like, so there are too many symptoms, the 50 are too much.
So, but main symptoms are few we will discuss. So mainly we have to discuss these patterns. Like see, we will able to treat most of the disease by these 13 patterns. 13 patterns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. The 13 pattern are there. The treatment protocol is also given here. Just why these 13 different treatment will work on all the problems which I just discussed with you. ये सिर्फ 13 प्रोटोकॉल्स है. इन 13 प्रोटोकॉल्स के माध्यम से हम उन 100 बीमारियों पर काम कर सकते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की. There might be little add-on, but these 13 protocols are the root protocol. Root protocol means like if we want to nourish the tree, we have to nourish the root. In the same way, without these 13 protocol, we cannot treat the disease from the root. Okay. So now we can see here, this will be provided to you in the PDF, don't worry. And so we will be starting the discussion from 0. Okay. It was the little introduction about liver meridian. तो जब भी हमारे पास कोई लिवर मेरिडियन की कंप्लेंट लेके आता है तो फर्स्ट आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप. पहले मैं आपको बताऊंगा कि देयर आर वेरी कॉमन सिम्टम्स. वेरी कॉमन सिम्टम्स. सबसे पहले व्यक्ति के अंदर कुछ बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं. इफ द पर्सन इज लर्निंग liver meridian first time and having some knowledge of the liver meridian, then the very basic things of the liver problems, if the person is having liver problem, then he will be getting irritability. क्या उसे होगा? Irritability. Yeah. So I will show you, I will write here. The first and the very common sign of the liver meridian is irritability. Okay. So always remember, whenever we will discussing the liver meridian, we will be talking about irritability. So in the 5-element cycle, we know there is a wood, fire, earth, metal, and water. The wood means liver and gallbladder. Okay. So the liver and gallbladder coming under the wood element. The energy of wood is bind. Bind is the energy. Okay. So liver is the yin channel and the gallbladder will be the yang channel. ये दो चैनल है हमारी बॉडी में. So in general, I will tell you, when we are learning the liver meridian, very basic information I will give you. Very basic information. What is the basic information? Number 1 is a wood element. Number 2, it is a yin organ or yin meridian. The emotion of liver is anger. Anger. हमारे लिवर का जो इमोशन है वो क्या है? Anger. The sense organ of liver is eye. Okay. And the tissue of liver are tendon. This is the very basic information about the liver channel. Okay. लिवर का जो टिश्यू है वो टेंडन है. लिवर का सेंस ऑर्गन आंखें हैं. लिवर का इमोशन एंगर है. Okay. This is the very basic information. I will give you an example.
Okay. One person is having some problem in the liver, maybe lots of problem in the liver, maybe anger, maybe fire. Eye will become red. Okay. So that's just an example. How the liver problem reflecting in the eyes, कैसे हमारी liver की problem आंखों में reflect होती है. Okay. It was just one example. Now, in the human body, there are total 12 plus 2 meridian that we know. Liver meridian has been considered as a very aggressive meridian. Aggressive meridian. Liver has been considered as a great general, a great fighter. लिवर को ग्रेट जनरल ग्रेट फाइटर कंसिडर किया जाता है. ओके. लिवर इज द आर्मी कमांडर. ओके. लिवर हमारी आर्मी का कमांडर है. सो whenever we talk about the liver means a meridian. If it is balanced, it will do lots of good things. But if it is imbalanced, it will do lots of damage in the human body. Okay, fine. So now, today, quickly, first I will tell you few symptoms, few signs which will help us to learn this liver chapter very easily. क्लिनिकल साइन. हम कुछ क्लिनिकल साइन की बात करते हैं. टू रिकॉग्नाइज लिवर इश्यू. हम कुछ क्लिनिकल साइन की बात करते हैं. नंबर 1, when we are going to discuss the liver pattern, जब भी हम लिवर पैटर्न की बात करते हैं, remember we are just talking about the liver pattern right now. We are not talking about anything else. Our focus is liver pattern. Okay. So whenever we will be having distension anywhere, distension, I will use this word again and again. डिस्टेंशन का मतलब होता है जैसे एक मैंने बैलून को फुलाया और बैलून फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है. अब बैलून फूलकर एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया कि अब मैंने थोड़ा भी फुलाया तो फट जाएगा. तो वो जो मैक्सिमम जो अवस्था है उसकी वो कहते हैं डिस्टेंशन, मतलब एकदम फूली हुई अवस्था. So like I am filling the balloon with the air and balloon is becoming bigger and bigger, reaching to the maximum. This is called distended. So I will use this word multiple times during the discussion of liver channel. The word is distension. I will tell you, person is feeling lots of distension in the chest. Means he is feeling like chest has become a very discomfort feeling in the chest. उसको लगेगा छाती फटी जा रही है. The person is feeling distension in the head. The person is feeling distension in the lower abdomen. The person is feeling distension somewhere. Whenever I use distension, distension का मतलब है कि गुब्बारा फूल रहा है और कभी भी फट सकता है. So whenever I use the word distension, it means energy is not flowing properly. The liver energy is not getting path properly. For example, कहीं से आंधी आ रही है और सामने दीवार खड़ी है ना, तो क्या होगा कि आंधी दीवार को पुश करने की कोशिश करेगी. अगर रास्ता मिल गया तो निकल जाएगी, नहीं तो वो दीवार पर बहुत प्रेशर क्रिएट करेगी. सो सम स्टॉर्म्स ऑफ coming from somewhere and pushing the wall. Okay. If the storm is not getting the path, then it will try to push the wall, even it can break the wall.
वो दीवार को पुश कर. So the same thing is happening when the liver chi is flowing, because liver is like a naughty children. लिवर एक शैतान बच्चा है. एक वो बच्चा है कि जो हमेशा जंप करता रहता है. लिवर इज लाइक ए वेरी नोटी बॉय, नोटी चिल्ड्रन who always want to jump, who never sit quietly, calmly. But what is happening? When this child is not able to jump, when this child is not able to explore, then the difficulty starts. तो लिवर वो एनर्जी है जिसे हमेशा घूमना है, हमेशा घूमना है, हमेशा घूमना है, लेकिन रास्ता बंद है और इसे रास्ता नहीं मिल रहा, तो होगा डिस्टेंशन. So this is called liver chi stagnation. So when we will use the word distension, the cause of distension is liver chi not able to flow. So that's why this is called liver chi stagnation. Distension anywhere might be liver chi stagnation. Okay, fine. So this is the first word. Please remember this word. Like I will ask you, one person is feeling distended, feeling in the head region or chest region or lower abdomen region. Anywhere, it means liver chi stagnation. Means liver energy is not able to flow. Now, second thing. Now, second thing I'm asking about the pain. Distension is over. Now I'm talking about the pain. I'm not telling about the normal pain. I'm telling about the sharp pain. Stabbing pain. Stabbing pain. ऐसा पेन कि कोई चाकू घोंप रहा है वाला पेन. So whenever I use stabbing pain, anywhere, stabbing pain during the period or menstruation, stabbing pain in the chest, okay, it might be heart attack also, stabbing pain in the lower back, stabbing pain in the knee, stabbing pain in the right eye, stabbing pain in the head region. वो पेन जो चाकू जैसा है, कोई चाकू मार रहा है इतना तेज. So whenever I use this word, always remember I am talking about liver blood stasis. और I right now you remember blood stasis. अभी हम blood stasis की बात कर, we are talking about the blood stasis. Blood stasis means, blood stasis को हम समझते हैं कि एक नाली में पानी बह रहा है, किसी कारण से रुकावट हुई और पानी सिर्फ थोड़ा सा ही बह पा रहा है, तो उसे कहते हैं, जब पानी थोड़ा सा ही बह पा रहा है उसे कहते हैं ची का स्टैग्नेशन, ची का अटकना. So suppose I am giving one example. There is a one canal. This is the canal. From the canal, just for example, I am telling water is flowing. But now, due to some blockage, maybe some blockage here, in the canal, now water is able to flow very little.
or now water is flowing with great effort or very little. So this is called chi stagnation. ऊर्जा का अटकना. Chi is not able to flow because of the blockage. Now what is happening? Sometime this blockage is very big. ये blockage बहुत बड़ा हो गया. Maybe very little space left. Maybe very little. Very little space left. Blockage is very big. Okay. Blockage become big. Now, due to the big blockage, water is not able to flow properly. So, lots of dirty particle depositing here. The dirty particle. जैसे पानी बहना रुक गया तो वहीं पर गंदा कचरा, पॉलिथीन, कागज के टुकड़े, the lots of paper particle, polythene particle are depositing here, and in the long term this part become black with very bad smell. So this is called very deeper blockage. So it was the some blockage, but it is a very deeper blockage. So this is a very deeper blockage called blood stasis. Blood stasis. In the human body also happening the same thing. Wherever it happened, it will create sharp pain, stabbing pain. So we tell blood stasis, a very common one. Blood stasis. ब्लड स्टेसिस का मतलब है ऐसा दर्द जैसे किसी ने कहा छाती में दर्द हो रहा है, मे बी हार्ट ब्लड स्टेसिस, यूट्राइन पेन, लिवर ब्लड स्टेसिस. ब्लड स्टेसिस मीन्स कि ब्लॉकेज जो था ना वो एक ग्रेड आगे बढ़ गया है. अभी भी इसे ठीक नहीं किया तो क्या होगा? फर्स्ट स्टेप ची स्टैग्नेशन, ऊर्जा की रुकावट, the blockage of energy, the first step. The second step, blood stasis, very deeper level of the blockage. What will happen if still will not able to repair it? This blood stasis will become metastasis. You know what is metastasis? Metastasis is the cancer. What is that? Cancer. तो जब किसी फीमेल को यूट्रन फाइब्रॉइड होता है ना, when the female is having uterine fibroid, dirty clots, dark clots coming out, we are telling blood stasis. Okay, so we have to understand what is blood stasis, what is the protocol of that. Sign, the person will be having stabbing pain. जब पीरियड आता है ना तो बहुत दर्द होता है और डार्क क्लॉट निकलते हैं. अरे मुझे कमर में बहुत दर्द होता है, वेरी सीवियर पेन इन माय लोअर बैक. I'm having very sharp pain in my chest region, like a heart attack. I'm having like someone is hitting my head region. I'm having migraine headache. That level. So that is blood stasis. Blood stasis might be anywhere. It might be head region, it might be chest region, it might be in the abdominal region, it might be in the stomach, it might be in the uterus. So this is the second sign I will use sometime. So please remember, first sign I told you is distension. Okay. Or the chi stagnation.
पहला मैंने साइन आपको बताया था डिस्टेंशन, ची स्टैग्नेशन, liver ची stagnation. Second, I'm telling stabbing pain, liver blood stasis. Okay. Now, it will not be sudden. It is a long planning. Now, third, I will tell you toxic fire. Toxic fire. Remember, it's a very important word. Toxic fire or too much fire. Okay. That is called liver fire. Very important thing. Toxic fire or too much fire. Now, just to remember, any disease in that if you feel too much fire. For example, herpes zoster. हर्पीज नाम की एक बीमारी होती है जिसमें पेशेंट को बहुत जलन होती है, बहुत पर्सन इज हैविंग ग्रेट वर्निंग. Any disease which can create shooting fiery feeling, trigeminal neuralgia, that is liver fire. Herpes, that is liver fire. Anger like nothing, person is breaking the TV and hitting some object, that is liver fire. Liver fire means toxic fire, too much fire. Any bacteria, virus, वो कोई भी चीज जो ज्वालामुखी जैसी फायर पैदा कर दे वो लिवर फायर है. एनीथिंग विच इज क्रिएटिंग फायर लाइक ए ज्वालामुखी, फायर लाइक ए वेरी बिग फायर, that is liver fire. Okay. Any condition. That's why most of the neuralgia like trigeminal neuralgia, herpetic neuralgia, any type of the neuralgia means pain of nerve. If it is too much, we are keeping it under the liver fire. That's why liver fire is very much important. लिवर फायर का बहुत बड़ा रोल है. तो अभी अगर आप किसी तरह की if you want to treat any type of the bacteria, virus, pathogen, if it is very aggressive, very aggressive, you treat liver fire. I am talking about the internal fire. I am talking about the internal condition. If any bacteria, virus attacking on the body and creating too much problem inside the body, inside. It is not like that you are going under the sun rays and you are feeling heat. No. But if you are going on the sun rays, if you are having allergy with the sun rays, so allergy will come in the liver bed. Right now we're talking about the liver fire. Liver fire means toxic fire. Toxic fire means extreme fire. It might be due to herpes. It might be due to the trigeminal neuralgia. It might be due to the any bacteria, virus, pathogen attacking on the human body and creating very high level of the disease. Fungus will not come. Fungus will go in the earth pattern, in the spleen pattern, right? Okay. So now here, the next sign I will discuss with you, very important, any type of tremors or convulsion.
or vibration, they are coming under liver bind. Liver itself is a good element. Liver खुद एक good है. So when the person is having unwanted tremors, like tremors in the hand, some tremors and Parkinson might be different. Tremors means like this. Parkinson means like this. So there might be many different type of the tremors. And the person is having tremor, convulsions, any type of the vibration. One patient coming like this, vibrating head, vibration in the fingers, arm, or facial vibration, tics, we are telling you facial tics, or eyes. So vibration anyway, or tics, vibration, unwanted movement happening anyway. Vibration in the tongue. We are asking patient, okay, show your tongue. And when the patient is showing tongue, there is a vibration in the tongue. So the tremor vibration, these all coming under the liver bind. But we will discuss it in a proper way. Okay. Now, jaundice, definitely jaundice. We will discuss jaundice is also the liver pattern, and we are telling when there is a dampness and the heat in the liver, it creates jaundice. We will discuss this. Okay, damp heat in the liver. Actually, remember one thing, whenever heat is meeting with the dampness, it becomes infection. जब भी जैसे गर्मी खतरनाक है, गर्मी खतरनाक है, लेकिन जब गर्मी पानी के साथ मिल जाए, जैसे कुकर से निकलती हुई स्टीम, वो और ज्यादा खतरनाक है. Got it? So heat is dangerous, but when heat is mixing with the dampness, like with the water, like we can see the steam coming out from the cooker, it's more dangerous. It can harm more. So if you want to do the jaundice, we will work on the damp heat. हम damp heat पर work करेंगे. Now quickly I will tell you two more things here. Now because I told you eyes are getting energy from liver. आंखों को जो ब्लड मिलता है, जो ऊर्जा मिलती है, वो कहां से मिलता है? लिवर से मिलता है. So if you want to work on the weakness of the eyes, if you want to work on the blurred vision, what is the treatment? Liver blood nourishment. So we have to work on the liver blood deficiency. जैसे हम लिवर के अंदर ब्लड बढ़ाते हैं, तो अभी अभी हमने देखा था कि लिवर मेरिडियन हमारी आंखों को क्रॉस करके जाता है, तो हमारी आंखों की कमजोरी दूर होने लगती है. So liver blood is the treatment if we want to work for the weakness of the eyes, or we want to work on the blurred vision. Blood vision. So the person is having high number due to the, जिनको चश्मे हैं, जिनको नंबर है, if they want to reduce their number, they can do the treatment of liver blood deficiency. So now the one more thing here I will discuss. Very common problem, we are telling headache, irritability. These all also coming under the liver pattern. We are telling
liver yang rising. Okay. So just I have discussed with you few things because when the patient is coming to us, okay, patient is telling doctor, I'm feeling distension in my abdomen. Okay. Okay, I'm feeling pain, stabbing pain somewhere, or I'm having tremors, or patient is suffering with the weakness of the eyes, or the headache, or the irritability. जब भी हमारा पेशेंट इन लक्षणों को शो करता है, ऐसे कुछ 50 साइन होते हैं, लेकिन ये सबसे मुख्य साइन, तो हम लिवर पैटर्न के की मदद से उन्हें ठीक कर सकते हैं. तो ये एक तरह का इंट्रोडक्शन था हमारा लिवर का. अभी हम इसकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे. एज आई अनाउंस्ड इन द मैसेज कि we are learning all the patterns one by one, and we have initiated with the liver pattern, and in this way this is the very wonderful meridian. After finishing this liver meridian, we will able to treat lots of problem. Okay. Okay. तो देखिए, अभी इसमें आपका कोई प्रश्न होगा. प्रोटोकॉल का प्रश्न तो अभी मैं आपको रिप्लाई करूंगा नहीं. अगर आपने पूछा कि आंखों का ट्रीटमेंट क्या होगा, सिर दर्द का ट्रीटमेंट क्या होगा, आई विल नॉट रिप्लाई राइट नाउ बिकॉज आई हैव टू डिस्कस एवरीथिंग systematically, right? So if you have any question, you can put in the group and I will reply there. Okay. So thank you so much, everyone. Let's close the session here, and we will see you tomorrow. कल हम मिलते हैं. We will see you tomorrow. If your question is other than protocol, I will reply. Yes. Govardhan ji, yes, please. Yes, sir. Yeah. Sometimes in our body, heartbeat-like sensation is coming, sir. Entire body moving with heartbeat while they are resting also. So why it comes? Actually, in the body, there are lots of blood vessels. We have blood vessels everywhere. We have blood vessels in the head region, chest region, arm, leg. So when the person is feeling heartbeat, you are feeling heartbeat for the patient, or patient himself feeling heartbeat? Patient feeling himself, sir. So they might be the person is having excessive heartbeat, so he might feeling more heartbeat. So in this, we have to go for, it might be liver pattern, but it might also be a heart pattern. It might be liver and the heart, both. Okay. But if the person is telling you, okay, when I get angry, or that time my heartbeat increases, then it's a liver pattern. Okay. So at the same time, you he's have to find getting dizziness out. also, sir. You have to find out that whether it's having connection with the liver or not. If it is having connection with the liver, then what are the signs? Irritability. Okay. If it is connected with the liver, anger. Oh, when I get angry now, my heartbeat increasing. Oh, when it means it is connected to the liver cell. But patient is telling, no, I am, there is no connection with the anger. My heartbeat increasing automatically this time. So we have to see whether there, because we are going to learn the sign of the liver, like pain in the hypochondrium, okay, like irritability, frustration, there are lots of signs. If patient is telling you some sign of the liver, then we can think for the liver. So we have to find out whether it's having connection with the liver or it's having connection with the heart. Both might be there, okay? Okay. Yeah, so we have to find out. Yes. Thank you, sir. Yes, Rajendra Prasad ji. प्रणाम साहब. प्रणाम जी राजन जी. मैं सर अब वो ल्यूकोडर्मा वाला वीडियो देखा था. जी क्या बोल रहे हैं राजन जी? ल्यूकोडर्मा वाला वीडियो देखा था मैंने आपका. ल्यूकोडर्मा, ओके. हाँ तो वो 5 पॉइंट है, उनमें ऊपर वाला पॉइंट है, वो उसमें आपने 2 पॉइंट बताए थे. हाँ. तो वो ऊपर नीचे एक निडल से आर पार कर दें. एक निडल आर पार? हाँ. नहीं. दोनों ही लगाने हैं. हाँ. अच्छा. और ये when कितनी we देर do तक? ear acupuncture, see, when we do ear acupuncture, we always try not to penetrate cartilage. Okay, because points are
very superficial. Points are just below the skin. So why to penetrate the cartilage? It will create lots of pain. ठीक है सर। है ना? और ये कितने दिन बाद लगाने चाहिए सर? For the person suffering with the leukoderma and you are doing auricular acupuncture, initially you can do 3-4 days regularly, even 5 days 3-4 regularly. दिन में? अच्छा। आफ्टर दैट पहले 3-4 दिन लगातार दे दो, फिर से एक दिन छोड़ के दो, और उसे देते ठीक है रहो, उसे 15-20 से 15-16 सेशन दे दो, फिर उसे देन यू कैन गिव द ब्रेक ऑफ 7-8 days, देन अगेन repeat. Patient will start ओके। getting the results. Patient will start getting result after 6-7 session. ऐसा होगा। अभी तो मैंने ऑल्टरनेट दे दिया सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो गुड चॉइस, है ना? यू आर और गिविंग सर गुड चॉइस। एक चीज और पूछ रहा था, अभी कोई आदमी आजकल बहुत सारे पैटर्नों में आते हैं, आजकल आदमी क्या होता तो है? मैंने मास्टर तुम आजकल ज्यादातर एक पैटर्न में कोई आता नहीं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हाँ होती है लोगों को। हाँ, तो किसी को स्किन प्रॉब्लम भी है, किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम भी है, तो एक दिन स्पाइन का ट्रीटमेंट बाय मास्टर तुंग और एक दिन वो दे दें इसका या सर स्किन का। पता कर लो कि what he wants. There are two things. Number one, what a patient want, and condition number two, also think as per TCM, maybe person is telling you multiple problem, but in the root there is a one problem. तो दोनों चीजें सोच लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पेशेंट को पूछिए आपका क्या मुख्य लक्ष्य है। वो बोलेगा कि मुझे कमर का दर्द, तो आप कमर के दर्द को मुख्य लक्ष्य बना के करिएगा, है ना? क्योंकि पेशेंट जिसके लिए है उसको काम करिए, उस पर पहले काम करना जरूरी होता है ना? थैंक यू सर। यस गुड्डी जी। Yes, sir. Very good evening. As usual, exclusive class you are having, sir. I'm very much fan of you. सर जैसे कि आपने बताया अभी कि रिवर विंड होती है तो वो हर्पिस एक्टिव होता है, राइट? और उसमें वो स्मॉल स्मॉल रेडिश दाने हो जाता है इज ड्यू टू फायर। तो स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस? No, like there in the herpes there is a neuralgia, there is a intense pain. Okay, you can ask the patient suffering with a herpes zoster. He's having pain, very big pain. That's why it's coming here. Okay, so I told you like liver fire. Liver fire means toxic fire. Fire means the person is having, oh, I'm feeling too pain, too burning. Even you can see that patient suffering with the trigeminal neuralgia, the person not able to eat the food, even he can't chew the food properly. So that's why I'm telling you the extreme level of the conditions we will consider under the liver fire, not all the problem. Okay. So my one thing that you said about the convulsion, right? So convulsion and epilepsy is different or one and the same? Actually, convulsion is a one symptom. So, like, what is the difference between convulsion and epilepsy? Epilepsy are having many types. Okay. If you see the classification of the epilepsy, you will find multiple type of the epilepsy. Convulsion is even a symptom, like sudden contraction of the muscle. That is convulsion. Epilepsy is a disease, neurological condition, neurological disease. In the disease, there is a seizures. But convulsion is a symptom. Okay, someone is getting fever, high fever can get the convulsion. So someone is getting some injury and a road injury and might get the convulsion. And someone is having epilepsy, and if the epilepsy also might have the convulsion. Convulsion is even symptom, है ना? झटका लगना वो सिम्टम, वो कई चीजों में हो सकता है। और मिर्गी जो epilepsy है वो एक बीमारी है, उसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ओके, ये अंतर है। Thank you. Gratitude. Thanks. यस विशालाक्षी जी। Sir, good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। Sir, I have two doubts. One is what is the how to differentiate the acute pain and sharp pain. Second question is if it is a bone problem,
we can misunderstand with the liver pattern, or it is if we treat the liver now, then bone problem is automatically gone, sir. If we treat the liver, So liver, your first question, what is the difference between acute pain and the sharp pain? yes, sir. And what is the second question? If we treat the organ, can we cure the any bone problem, or how to Which differentiate organ? Which organ? liver organ? Suppose So how can we liver organ? How is connected to the bone problem? I'm asking that if suppose someone is having the lower back pain, then if it is connected with any organ that suppose or else I will treat the bone, sir. Actually, that's why we have to see many symptoms. Like patient will tell you, I'm having lower back pain. I'm also having pain in the hypochondrium is below the ribs. I have irritability. Okay, then it's liver pattern. But so we will be learning all the symptoms, multiple symptoms. After seeing the symptom, person will tell you, I'm having lower back pain. And what else? I'm having this, I'm having that. So we'll able to find out, okay, whether this is liver pattern or this is the kidney pattern. So whichever the pattern, we will able to treat. We will discuss. It is very initial condition. I told you now we are going to discuss many things, Okay, many sir. symptoms. Okay, that time we will. And regarding the sharp pain, Hmm. when we talk about the sharp pain means the quality of pain. See, quality, like someone pricking the needle, pricking the knife. That is sharp means quality of the pain. Pain. Okay. Okay. It might be acute, it might be chronic, both. Now, what is the acute? Acute condition means the duration. Duration means started like COVID-19, acute, started immediately. Flu started immediately. Short term, toothache. Okay. After the injury, I start getting toothache. So acute means duration. Okay. Just now. And sharp means quality. Oh, like someone pricking the knife. There is a difference. Okay, got it? Oh, okay, sir. Thank you, sir. Yes, Anmolji. Good evening, sir. Very good evening. Yes, sir. I wanted to ask कि ये जो भी अपन ने अभी देखे हैं विथ प्रोटोकॉल्स, तो हमको ये सारे जो सिम्टम्स है ये मैच करके कोई भी एज ग्रुप के हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे हेडेक है या माइग्रेन है, तो हम हमेशा यही प्रोटोकॉल्स ऐसे यूज करते हैं, लिवर पे ही जाते हैं, या सर कि जैसे किडनी में भी हम पढ़ते हैं कि लोअर बैक पेन होता है, तो लिवर में भी लोअर बैक पेन के लिए अलग अलग देते हैं, तो ये डायग्नोसिस हम कैसे कर पाएंगे सर कि हमको यही प्रोटोकॉल्स पे एक यही प्रोटोकॉल तो पे हम ही सीखने निश्चित वाले होना हैं। है? यही तो हम सीखने वाले हैं कि डायग्नोसिस अच्छा कैसे कि एक व्यक्ति ने बोला कमर में दर्द है, जी तो अभी और भी कुछ चीजें तो हमें उसे कंपेयर करना है ना। हमारे सामने आ गया कि इसको कमर में दर्द है, पर्सन इज हैविंग लोअर बैक पेन, बट जी वी हैव टू, वही तो मुझे मैं आपको बता रहा हूँ। अभी डायरेक्ट आप कंक्लूजन पर जंप मत करिए, अभी डायरेक्ट प्रोटोकॉल पर जंप मत करिए। अच्छा अभी तो ओके हम समझेंगे इस चीज को कि जी और क्या लिवर में क्या क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति को कमर में दर्द हुआ, आपने किडनी हम्म का प्रोटोकॉल लगा दिया हो, पेशेंट बोलेगा मुझे कोई आराम नहीं है, हम्म इसका मतलब किडनी का बैटर नहीं था वो। जी तो सर पेशेंट को आखिर क्या, कमर दर्द क्या है? कमर दर्द किसी भी कारण से हो सकता है। कमर दर्द कॉन्स्टिपेशन से हो सकता है, कमर दर्द स्टमक अल्सर से हो सकता है, किडनी स्टोन से कमर दर्द हो सकता है, कमर दर्द लंबर स्पॉन्डिलोसिस से हो सकता है, साइटिका न्यूरोलजिया से हो सकता है, कमर दर्द के बहुत कारण हो सकते हैं। तो ओके हमें मतलब जी पहचानना होगा क्यों है कमर में दर्द। कैसे पहचानेंगे? उसी को हम बोलते हैं पैटर्न डायग्नोसिस। कि हम पैटर्न अच्छा डायग्नोसिस में क्या करेंगे कि वी विल बी डिस्कसिंग सिम्टम्स। ओके, व्हेन द पर्सन इज हम्म हैविंग telling you, okay, I'm having lower back pain, this pain is going to scrotum, है ना? अरे मतलब मामला बदल गया। ऐसा पेशेंट ओके बोलेगा आपको कि मुझे लोअर बैक पेन होता है और ऐसा हम्म होता है, पेशेंट बोलेगा। वो आपको समझ में कब आएगा?
जब आपको लोअर बैक के वेरिएशन पता हो। अभी तो जी हमें पता ही नहीं है कि हमें पता लोअर बैक पेन मतलब लोअर बैक पेन। जब हमें पता होगा कि लोअर बैक पेन मतलब ओके लोअर बैक पेन रेफरिंग टू द लेफ्ट लेग, इसका अलग मतलब है। लोअर बैक पेन रेफरिंग टू द राइट लेग, इसका अलग मतलब। हर चीज का अपना एक अलग मतलब होता है, वही पैटर्न है ना, वही डायग्नोसिस ओके है। ओके। ओके सर, ये पैटर्न डायग्नोसिस से ही अपन पकड़ पाएंगे कि जो हर पेशेंट को सेम प्रोटोकॉल नहीं लगेगा, पेशेंट को देख के डायग्नोस करके फिर अपन को चूज करना है ना सर? वही परफेक्ट, यस, वही बात। ओके 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 सर, ओके, थैंक यू सर। यस रमेश जी। हाँ. जी Sir, रमेश जी। sometimes you, what happen, when we go to bed, and sometimes you feel like there's an involuntary movement of your shoulders. And before you settle down, sometimes happen for few minutes, you try to adjust your shoulders, and sometimes you feel like some involuntary movement in the abdomen area. So it will be which category? It is blood deficiency or wind excess? See, if the person is having involuntary movement, it might be liver bend, or it might be liver bend, and it might be liver blood deficiency. It might be some deficiency also. Hmm. अभी हमें और थोड़ा क्रॉस वेरीफाई, अभी हमने लिवर में bend डिस्कस किया ही नहीं है आपसे, Okay. है ना, अभी नहीं किया, Okay. अभी हम करेंगे उसके। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू देयर इज अ हाफ empty glass, Hmm. okay, I am telling half empty glass. Previously it was having full, in the glass there were water, Hmm. full glass was filled with the water, but now I have drink half glass, now only half filled water, in the half there is a bind, okay। तो बिंड होती है, बिंड इनवॉल्नरी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन अब वो हमें उसे रिफिल भी करना पड़ता है ग्लास को, है ना। ये Hmm. सब समझा जाएगा अभी, तो हम बताएंगे आपको, है ना। लिवर ब्लड डेफिशिएंसी ग्रेडिंग लिवर बिंड, लिवर इन डेफिशिएंसी ग्रेडिंग लिवर बिंड। Sir, in this also we have to consider the age part also, no? Because at one particular age there may be something. है ना? एक्चुअली वट एवर, बट हम टीसीएम में तो हर चीज का इलाज है ना, उसमें हम्म, ऐसा थोड़ी लिखा है कि एज फैक्टर है तो इलाज नहीं है, उस हम्म, एज का भी पैटर्न है। जैसे एजिंग इज ऑल्सो पैटर्न। हम्म, इफ समवन इज गेटिंग एजिंग, है ना, बुढ़ापा आ रहा है, वो भी एक तो पैटर्न है। किडनी डेफिशिएंसी हो रही है तो बुढ़ापा आ रहा है, पैटर्न तो हर चीज का होगा ना, एज हम्म, पैटर्न का भी है। ओके, और इनवॉलेंट्री मूवमेंट तो यंग लोगों को भी है, ट्रॉमर्स एंजाइटी में बहुत सारे बच्चों को इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है हम्म, वेरी यंग एज। तो वो जो डेफिशिएंसी है वो अगर किसी भी अवस्था में हो जाए, किसी भी उम्र में हो जाए, वो सिम्टम आ जाएंगे। टीसीएम का एक्सप्लेनेशन है। हम्म, अगर आपने वो पहचान लिया तो आप ट्रीट कर सकेंगे, किसी भी उम्र में कर सकेंगे। कभी कभी हमारी लिमिटेशन भी हो जाएगी कि हो सकता है कि हम 100% ठीक ना कर पाए क्योंकि डिसीज इज टू डीप रूटेड। yeah, कभी कभी हम, because I am talking about 70 plus person. नहीं ऐसा नहीं है, मतलब वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले अगर हमने से डायग्नोसिस कर लिया ना, हम्म, तो या तो हम उसे पूरा ठीक करेंगे, नहीं तो हम उसे हो सकता है 70-80%, 60%, एक सर्टेन लेवल तक हम उसे ठीक कर सके, है ना। हम्म, हम्म, बट वी कांट, अगर हमें डायग्नोसिस ही नहीं हुआ तो हम ठीक कैसे करेंगे, बात ये। yes sir, डायग्नोसिस नहीं होगा तो हम कुछ भी पॉइंट लगाएंगे, अंदाज से लगाएंगे, अंदाज से लगाने में पूरा आराम नहीं होगा। yes sir, okay sir, thank you sir. जी वेलकम। यस फिरोजुद्दीन जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार फिरोजुद्दीन जी। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे लीवर ओवर एक्टिव हो जाता है तो हम्म। वो किसी भी कमजोर ऑर्गन पे अटैक करता है सर। हाँ, तो हाँ, तो मुझे ये पूछना था भी ओवर एक्टिव कब होता है, उसकी विंड बढ़ती है, हीट बढ़ती है, या अर्थ एलिमेंट बढ़ता है लीवर के अंदर, ऐसे पूछना था आपको मैं मुझे एक सर। एग्जांपल दे देता हूँ। वैसे ही आपने आगे का प्रश्न पूछा है, लेकिन आपने पूछा तो मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे किसी ने बहुत गुस्सा किया तो लिवर ओवर एक्टिव हो गया, क्योंकि एंगर इज द इमोशन ऑफ हाँ लिवर, जी। बिकॉज ऑफ द एंगर लिवर इज गेटिंग ओवर एक्टिव। ओके। और
when the liver is getting overactive, it might attack somewhere. It might attack somewhere. कहाँ पर? जैसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते हैं और बीच में बच्चा है तो बच्चे की पिटाई लगा देते हैं। लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं बच्चे? हाँ जी। क्योंकि बच्चा कमजोर है, बच्चा रिप्लाई नहीं कर सकता ना। समझ रहे मेरी बात को? कि चलो आपकी, हाँ जी। जैसे हाँ जी। वी हैव सीन लाइक आपका आपका रास्ते में किसी से लड़ाई हो और आप घर पर आए और घर पे लोगों पे भड़क गए, है ना? ऐसा होता है ना? हाँ जी। So what is happening when due to the anger liver is becoming overactive, then it will attack anywhere. It will attack on the element which is weak. If spleen is weak, it will attack on the spleen. If it is if lung is weak, it will attack on the lung. तो लिवर जब ओवरएक्टिव होता है ये आक्रमण करता है। लेकिन ये हम बात करेंगे, समझेंगे। अभी तो आपने पूछा है, आप बहुत आगे का प्रश्न पूछा है आपने, फिर भी मैं भी बता रहा हूँ कि लिवर जब ओवरएक्टिव होगा तो वो उस एलिमेंट पर आक्रमण करेगा जो कमजोर होगा। जो जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुखी रहता है, उसका लंग कमजोर हो जाएगा तो लिवर लंग पर आक्रमण कर देगा। कोई व्यक्ति बहुत चिंता करता है तो उसके कारण उसका स्प्लीन कमजोर हो जाएगा, तो अगर लिवर ओवर एक्टिव हो गया तो स्प्लीन पर आक्रमण कर देगा। तो लिवर आक्रमण हमेशा उसी पर करेगा जो ऑलरेडी कमजोर है। जो ताकतवर है लिवर उस पर भी आक्रमण नहीं कर पाएगा, भले ही ओवर एक्टिव हो गया तो भी नहीं कर पाएगा, है ना? तो ये बात है, इसे ओके सर। पैटर्न डायग्नोसिस। सो व्हेन द लिवर इज अटैकिंग ऑन द लंग्स, इट्स क्रिएटिंग एलर्जिक अस्थमा। ओके, when the liver is attacking the intestine, it creating IBS, irritable bowel syndrome. Okay, in this way ओके सर। many things ऐसे होती हैं। थैंक यू सर। वेलकम। यस प्रीति कुमारी जी। Yeah, sir, you said headache, no? This liver yang rising, huh? And headache is like a pain thing only, no? So it is a differentiate between this stagnation of liver. What is the difference between both? Like what we should go for that? अगर headache ही हो, pain headache वाला, मतलब throbbing and stabbing pain, like तो दोनों चीजें हैं। तो like what we should go for that? दोनों का इलाज करेंगे, both. अच्छा। Like female is suffering with uterine fibroid, हम्म। we treat liver chi stagnation with liver blood stasis. Both. If you see the combined symptom, we have to treat both. 50% point will be same only. Only 2-3 points will be different. So we can make one protocol and we will use both protocol together. And the yang rising is what? Like I can't understand that. That we'll discuss, not now. Yeah, in the course only. Yeah. Okay. Oh, okay. Thank you. Yes, Jaswinder ji. गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, जैसे पेशेंट के कंधों में दर्द है सर, कंधों में जकड़न हो जाती है और उसके आंखों के पीछे बीच में दर्द होता है सर, और पेशेंट का जो ओटीपीटी है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, और जो हेडेक होता है वो ऑक्सीपिटल एरिया में ज्यादा होता है और आंखों में आता है बैक साइड। तो सर उसको हम लीवर की एनर्जी की रुकावट मानेंगे सर उसको? फिर मैं आपको 50 लक्षण दूंगा, उन 50 में से अगर आपको 5 भी मिल गए तो आप लीवर ची स्टैग्नेशन मान लेना। उन 50 में से ना तो ऑक्सीपिटल हेडेक है, ओके, रेट्रो ऑर्बिटल पेन जरूर है, जो आपने बताया ना आंखों के पीछे का दर्द, वो जरूर है उसमें। लेकिन अभी आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, है ना? क्योंकि लक्षणों के आधार पर हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। सर एक क्वेश्चन मेरा और है सर। हाँ बोलिए। जैसे यूट्रस जो है अट्रोप्ड है सर, या ओवरी अट्रोप्ड है, तो उसमें सर लीवर का रोल रहेगा सर? यूट्रस क्या है? अट्रोप्ड छोटा हो गया सर, एट्रोफाइड। शुगर। ओके, हाँ जी, एट्रोफाइड, यस हाँ डेफिनेटली। जी। व्हेन द लिवर ब्लड डेफिशिएंट, लिवर ब्लड इज कम होता है, liver is not able to supply the enough blood to the uterus, uterus get atrophied.
ओके तो सर। उसमें लिवर ब्लड डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर किसी फीमेल को पीरियड नहीं आता है, एमेनोरिया और कम आता है, ओलिगोमेनोरिया, या यूट्रस छोटा हो जाता है, हम लिवर ब्लड डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि लिवर इज द ऑर्गन हु सप्लाई ब्लड टू द यूटेरस। यस। ओके सर, ओके। थैंक यू सर। यस दीपिका जी। लीवर ब्लड डेफिशिएंसी। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, दीपिका। हम फीवरिश फील करते हैं, बट बॉडी के अंदर से फीवर फील कर रहे हैं, बट थर्मामीटर में फीवर नहीं आ रहा। और आईज में से थोड़ी सी मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आंख में से आग निकलना, जलन होना, वैसा कुछ, तो उसको क्या कंसीडर करेंगे सर? वो yin डेफिशिएंसी है। लीवर। तो हाँ, वो लिवर का पैटर्न नहीं है उसे। हाँ, वो हो भी सकता है, वो लिवर ब्लड डेफिशिएंसी भी हो सकता है, लेकिन वो yin डेफिशिएंसी है। yin डेफिशिएंसी में होता है फाइव palm हीट, मीन्स बोथ palm हॉट, बोथ फीट हॉट, चेस्ट हाँ हॉट, आई हॉट, cheeks हाँ hot, ear hot, feeling हाँ। heat, feverish inside but not coming in the thermometer. यस। So this might be the this is the yin deficiency। ये yin deficiency है। आपने जो हाँ लक्षण कहे हैं वो हाँ लक्षण लिवर ब्लड डेफिशिएंसी में भी कुछ होते हैं, तो मैं इसको बताऊंगा। तो दो में से आप देखना कि कौन से लक्षण ज्यादा मिल रहे हैं, कि लिवर इन डेफिशिएंसी के लक्षण मिल रहे हैं कि लिवर ब्लड सर, डेफिशिएंसी के। मुझे ही फील हो रहा है। सुबह से प्रॉब्लम हो रही है मेरी, तो अंदर मतलब हाथ पैर में दर्द भी हो रहा है। मौसम यहाँ दिल्ली एनसीआर में चेंज हुआ है, गर्मी से वापस ठंड आ गई है ना, अजीब सा मौसम हो रहा है। तो आई थिंक उसका भी असर होगा, बट आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, और लोअर बैक पेन छिड़ गया है अचानक से, कभी होता नहीं है मुझे, और पेट भी गड़बड़ हो गया है। देखो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। मैंने पहले ही बोला था हम प्रोटोकॉल का डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि वो तो ठीक अधूरी आधी अधूरी नॉलेज से प्रोटोकॉल का डिस्कशन करना, इट है। विल हाँ बी लाइक मिसगाइडिंग, है ना। ठीक है सर। अगर मैं आपको कुछ बोलूंगा ये एक तरह का मिसगाइड होगा। ठीक है सर। कि अभी आप एकदम से, मैं अभी अभी मैं इट्स भी वेरी, समझ नहीं पाऊंगी सर, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं उसके बारे में, तो मैं समझू भी कैसे ना। हाँ। तो ये ना मिसगाइड, अभी मैं आपको बोल दूं ऐसा 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 ऐसा, तो मिसगाइड हो जाएगा। अभी नहीं, अभी प्रोटोकॉल का भी हम बात करें। सिलमिया जी। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। 2 days ago, when we had the class on the meridian, the master tongue class, या my mother, she said like she had stabbing pain in the chest, and then her eyes had become very red. So at the time, I didn't know what to do. So I just thought I'd take the liver and the pericardium meridian. So I just even method. I did liver 2 and pericardium 9. So I just did that, and the next day she rang me and she said her eyes it completely cleared. The redness went away, and the stabbing pain. The pain had also gone away. So today, when we studied this, so I just felt that it was the exact thing that she had. And my question is, this is just my experience, but my question is, 3 months ago, when I was just reading on acupuncture, I had seen something called blood stasis, which I did not know, but there was a protocol and how to identify it. So at the time, I had seen in my mother, like her lips had become very bluid or black, that kind of a thingy. And her tongue also, they were like on the corners, there was like bluish, blackish color. So she showed all the symptoms of blood stasis, and there was a formula as well. So I had tried that on her. And then afterwards, her lips became pink. And then that color on the tongue, that also gradually went away. So my question is now, that so at that time, did she have blood stasis? And this was like 2 days ago, when we studied about that Ju Ying meridian. My question is like, so was that blood stasis? Yes, the 2 days ago as well, because she had like stabbing pain. She was saying that in the chest, it was like the knife was stabbing, and her eyes had become very red as well. So was that blood stasis as well? That's a liver Yeah, pattern. actually, this is the blood stasis, and we can tell it's hard blood stasis, but you used your liver too, right? Yes, I did liver too. Liver And too is one of the very great point for very good point for blood vessels of the heart. Liver too. okay, and it had Liver too, one of the very good point for
emergency management. And definitely because we are working on the liver meridian, you are targeting pericardium meridian, right? Yes, So I just did that. I Yeah. did not know what I was doing. I didn't know any So protocol. ultimately, you liver 2 is the fire point of liver. Okay. Yes. In the liver meridian, we have liver 1, liver 2, liver 3 in this way. Liver 2 is the fire point of the liver. You arrested the liver fire. So you arrested the cardiac problem because liver is the mother of heart. At the time, I just thought because we had studied about that Ewing Yeah, that's meridian. good. Yeah. So So I there is just did definitely that. relationship. Yes. If you work on So- the liver meridian, definitely you will able to treat the pericardium. And liver is having very deeper connection with the many meridian, like in the as per the alarm clock cycle, the timing of liver meridian is night 1 to 3. So as soon as you treat the liver meridian, you are also treating the small intestine meridian because the timing of small intestine meridian is 1 to 3 in the day. And small intestine meridian is nothing but blood vessels. And on the same day, there was somebody else, like they said like there was heat on from the legs, from below the knees to the feet. That person said they had lots of heat, and then they feel hot all the time, sweating. So again, I don't know because I'm just learning. So at that time, I just did just one point, the gallbladder meridian. And but then the next day I asked, and she said she didn't have any no change. It was the same. So I just thought I'd share my experience. Okay, good, wonderful. So keep doing that. Thank you so much for sharing your experience. Yeah. Wonderful. But both are different. Okay. But anyway, if you know any knowledge and which can be helpful for anyone, it's really very great. So thank you so much, everyone. Let's conclude the session today. Now we'll see tomorrow. And we'll start the class tomorrow by 8 o'clock. Okay. Thank you so much. Good night.